हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। हेमेटोलॉजी में हीमोस्टेसिस का लेक्चर नंबर 8 है। ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी कोएगुलेंट्स। एंटी कोएगुलेंट्स मीन्स द सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, विच डजंट अलाउ द ब्लड टू क्लॉट। हीमोस्टेसिस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। सो लेक्चर नंबर 8। क्लिनिकली हम कौन कौन से एंटी कोएगुलेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अपने पिछले सेशन में हमने जाना था इंट्रावेनस एंटी कोएगुलेंट्स के बारे में। हेपेरिन का जिक्र किया था हमने, एंटीथ्रोम्बिन 3 की बात करी थी। इन सम thromboembolic conditions. What are thromboembolic conditions? Thrombus, आपको याद होगा, a clot which is formed inside the blood vessel. If it detaches or a part of thrombus detaches and moves freely in the blood, we call it as emboli or embolus. Overall condition is thromboembolism. So you can say the formation of the abnormal clots in the blood vessel. So in some thromboembolic conditions, it is desirable to delay the coagulation process. And we have various anticoagulants for clinical purpose. Most useful clinically are heparin and vitamin K antagonist coumarins. We'll discuss about coumarins. Warfarin का जिक्र करेंगे इसमें. Newer classes of anticoagulants have also been developed these days, which includes the factor 10A inhibitors. Heparin. If you remember, heparin is a negatively charged conjugated polysaccharide, and by itself it has very little or no anticoagulant properties. We discussed in the previous session. But when heparin combines with antithrombin 3, then the effectiveness of antithrombin 3 for removing thrombin, it increases by 100 to even 1000 folds, and so it is acting as an anticoagulant. So heparin, which is a negatively charged conjugated polysaccharide, by itself it is having very limited activity as an anticoagulant, but when it combines with antithrombin 3, then that complex that increases the efficiency or the effectiveness of antithrombin 3 for removing thrombin. So the complex of heparin and antithrombin 3 removes what? That's going to remove the activated factor 12, 11, 10 and 9. Heparin commercially कहाँ से extract होता है? Commercially, heparin is extracted from several different animal tissues and prepared in almost the pure form. Heparin is also given intravenously during certain medical procedures to prevent the clotting. Injections of very small quantities, about 0.5 to 1 milligram per kilogram of the body weight, that can cause the blood clotting time to increase from a normal of about 6 minutes, 2 to 6 minutes we take, right, normally, and it can go up to 30 minutes. Injection of about 0.5 to 1 milligram per kilogram of the body weight. Action of heparin lasts for about 1.5 to 4 hours. और heparin को शरीर में एक एंजाइम जो है, the injected heparin is destroyed by the enzyme heparinase. Then comes the anticoagulant warfarin. So warfarin and dicumarol, they are derivatives of coumarin. These are derivatives of coumarin. कौन-कौन? Warfarin and dicumarol. What is coumarin? It's a natural organic compound with a very sweet scent. It's found in many plants like cinnamon, दालचीनी जो है, tonka beans हैं, lavender है. It's widely used in perfumes, cosmetics, and it is also a base for anticoagulant drugs because of its blood thinning properties. So coumarin has blood thinning properties.
Warfarin and dicumarol, they are derivatives of coumarin. Now, जब वारफेरिन एक पेशेंट को दिया जाता है, then the amount of active prothrombin and factor 7, 9 and 10 which are formed by liver, we know they begin to fall. So warfarin जब दिया जाता है पेशेंट को तो होता क्या है, एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एंड देन फैक्टर 7, 9 एंड 10 जो कि लिवर में बन रहे हैं, दे बिगिन टू फॉल. लेकिन ऐसा होता क्यों है? वॉरफेरिन ऐसा क्या करता है? वॉरफेरिन जो कमर्शियली कॉमेडिन भी कहते हैं हम, इट ब्लॉक्स द सेलुलर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन के. तो वॉरफेरिन के केस में आपको ध्यान रखना है विटामिन के क्या हो रहा है. coumarin is blocking the cellular activation of vitamin K. कैसे? By inhibiting one particular enzyme. The enzyme is vitamin K epoxide reductase complex, VKORC1. Let's see, what is that enzyme? Vitamin K epoxide reductase complex. Vitamin K is required for blood clotting. We know vitamin K is called anti-hemorrhagic vitamin. It is playing a certain role in this entire coagulation process, and there is a particular enzyme that is VKORC1. The activity of this enzyme is getting inhibited. अब हम समझते हैं कि ये एंजाइम एक्चुअल में करता क्या है. वॉरफेरिन ने क्या करा? वॉरफेरिन is inhibiting this particular enzyme. This enzyme actually converts inactive oxidized form of vitamin K to its active reduced form. So we'll write inactive vitamin K is converted into active vitamin K. The inactive form is oxidized form, and the inactive form is reduced form. Sorry, the active form of the vitamin K is the reduced form, and the inactive form is the oxidized form. Which enzyme is going to do this thing? VKORC1. Vitamin K epoxide reductase complex 1. When this enzyme is getting inhibited, by inhibiting this enzyme, warfarin is going to decrease the available form of vitamin K into the tissues. जो vitamin K की active reduced form है वो कम हो गई. अब उसकी वजह से क्या हुआ? When this decrease occurs, coagulation factors are no longer carboxylated and they are biologically inactive. जो coagulation factors हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया, they are no longer carboxylated and they are biologically inactive. So what role this vitamin K is actually playing? The active form of the vitamin K, which is the reduced form, what is it doing? Let's see. Vitamin K is essential for a liver carboxylase. It's an essential factor to a liver carboxylase that is going to add. So remember, there is an enzyme. We're generalizing it by saying liver carboxylase that is adding carboxyl group to what? Glutamic acid residues. Glutamic acid is an amino acid. Amino acids are forming proteins. So glutamic acid residues on 5 of the important clotting factors, that is prothrombin, factor 7, 9, 10 and protein C. तो ये clotting factors क्या हैं? Proteins हैं. Prothrombin, factor 7, factor 9, factor 10, protein C. विटामिन के जरूरी फैक्टर है एक लिवर कार्बोक्सिलेज के लिए, जो कि कार्बोक्साइल ग्रुप ऐड करता है ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज में,
जो कि मौजूद हैं 5 इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर्स में, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7, फैक्टर 9, 10 एंड प्रोटीन सी. Upon adding the carboxyl group to glutamic acid residues on the immature clotting factors, तो immature clotting factors के जो ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज हैं वहां पे जब कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया तो होता क्या है, वो तो खुद मैच्योर हो गए, लेकिन विटामिन के इज ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम्स इनएक्टिव. जब विटामिन के ने ये प्रक्रिया करी है तो विटामिन के बेचारा स्वयं जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और इनएक्टिव हो गया. हमने देखा ऑक्सीडाइज फॉर्म इज इनएक्टिव and the reduced form is active. Then there's another enzyme which we discussed, vitamin K epoxide reductase complex 1, that reduces vitamin K back to its active form. तो ये vitamin K जो है इसके लिए ये एंजाइम बहुत ज़रूरी है कि वो वापस उसे उसकी एक्टिव अवस्था में ला सके. एंड इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन के, अगर विटामिन के एक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ, subsequent insufficiency of these coagulation factors in the blood can lead to serious bleeding tendencies. तो हमने देखा कि वॉरफेरिन एक एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, वो एंजाइम इनएक्टिव विटामिन के को एक्टिव विटामिन के में कन्वर्ट कर रहा है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. For several days the body stores of active coagulation factors will degrade and they are replaced by inactive factors, right. Although the coagulation factors they continue to be produced, they have greatly decreased coagulation ability. अगर हमने warfarin दिया है पेशेंट को तो उसका नतीजा जो है वो ये होगा. Now, after administration of an effective dose of warfarin, the coagulation activity of blood decreases to about 50% of the normal by the end of 12 hours. 12 घंटे के अंतराल में, 12 घंटे के एंड में 50% तक ये एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कोएगुलेशन एबिलिटी, एंड टू अबाउट 20% ऑफ द नॉर्मल बाय द एंड ऑफ 24 आवर्स. इन अदर वर्ड्स, कोएगुलेशन प्रोसेस इज नॉट ब्लॉक्ड इमीडिएटली. वॉरफेरिन देने से इमीडिएटली कोएगुलेशन प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा, बट it must await the degradation of the active prothrombin and the other affected coagulation factors which are already present in plasma. Normal coagulation will return within 1 to 3 days after discontinuing this Heparin therapy or the Warfarin therapy. अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई अब कुछ नए हमारे पास जो है दवाइयाँ भी मौजूद हैं, जैसे ज़ारलेटो या rivaroxaban. For a long time, warfarin was the only anticoagulant drug that could be taken orally, जो orally लिया जा सकता था, and as such it has been important for preventing the blood clot formation in those people who are having atrial fibrillation and to treat the venous thromboembolism. But अब नई दवाइयाँ भी हैं, new oral anticoagulants such as rivaroxaban, Xarelto, that directly inhibit activated factor 10. फैक्टर 10 जब एक्टिवेट होता है तो फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है ना, तो अब हमने ऐसी दवाइयां भी बना ली कि भाई एक्टिवेटेड फैक्टर 10 को इनहिबिट कर दो. दैट इनहिबिट एक्टिवेटेड फैक्टर 10. दीज आर नाउ अवेलेबल एज ऑल्टरनेटिव टू वॉरफेरिन फॉर सम पेशेंट्स. ये तो हमने एंटीकोएगुलेंट्स का जिक्र करा जो हम शरीर में डालते हैं पेशेंट में, चाहे हेपेरिन हो, राइट, जो एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ कंबाइन करता है, या वारफेरिन हो. लेकिन शरीर के बाहर जब आपने ब्लड विड्रॉ कर लिया है, चेस्ट ट्यूब में है जैसे, और आप चाहते हैं कि ब्लड क्लॉट ना करे या कुछ समय तक क्लॉट ना करे, तो फिर हम क्या करते हैं? वी कैन यूज सिट्रेट आयंस, ऑक्सलेट आयंस, EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. So the blood removed from the body, blood sample जैसे हमने लिया पेशेंट से, blood removed from the body and held in a glass test tube normally clots in about 6 minutes. Normal जो 6 मिनट में क्लॉट कर जाता है. Blood collected in siliconized containers often doesn't clot for 1 hour or even more. Now what is the reason? ऐसा डिले क्यों है? The reason for this delay is that when you are preparing the surfaces of the containers,
with silicone it is going to prevent contact activation of platelets and factor 12. ये हमने पढ़ा था, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवेज जो मैंने बताए थे, तो सारे मैकेनिज्म आपको बताए थे. एंड दीज आर द टू प्रिंसिपल फैक्टर्स दैट इनिशिएट द इंट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म. तो अगर आपने सिलिकोनाइज कर दिया है तो प्लेटलेट एक्टिवेट नहीं होंगी, फैक्टर 12 एक्टिवेट नहीं होगा. Heparin can be used for preventing coagulation of blood outside the body as well as inside the body also. Heparin, which is specially used in surgical procedures in which the blood must be passed through a heart-lung machine or artificial kidney machine, जब hemodialysis करते हैं, we have to take the blood out of the patient and then circulate it back into the body. Then also we are using heparin, right? Now, we know that calcium ions are playing very important role in blood clotting. तो अगर हम calcium ions का जो है chylation कर दें या हम किसी तरह से precipitation करवा दें तो भी blood clot नहीं करेगा. तो citrate, oxalate यूज किए जाते हैं. Substances that decrease the concentration of calcium ions in blood, they can also be used for preventing blood coagulation outside the body. तो calcium को अगर हम कम कर दें तो कैसे कर सकते हैं? For instances, soluble oxalate compound mixed in a very small quantity with a sample of blood is going to cause precipitation of calcium oxalate. So oxalate ions, they're going to cause precipitation of the calcium from the plasma, and that is going to decrease ultimately the ionic calcium level so much that the coagulation is blocked. So one is the oxalate ions. Then you can deionize blood calcium, that will also prevent coagulation. So to do this, any substance that deionizes blood calcium, negatively charged citrate ion, especially valuable for this purpose, right? It is mixed with blood usually in the form of sodium citrate, ammonium or potassium citrate. Citrate ions करते क्या हैं? They combine with calcium in the blood. They are going to combine with calcium in blood and they cause unionized calcium compound, and the lack of ionic calcium prevents coagulation. So citrate ions can be used, oxalate ions can be used. जो citrate हैं, citrate anticoagulants वो बेहतर रहते हैं. They have an important advantage over the oxalate anticoagulants. क्यों? Because oxalate is toxic to body, whereas moderate quantities of citrate can be injected intravenously. So remember, oxalate is toxic to the body. इंजेक्शन के बाद citrate ion remove हो जाते हैं blood में से within few minutes. कैसे? By liver, and they are polymerized into glucose or metabolized directly for energy. 500 ml of blood जो है that has been rendered incoagulable by citrate, it can ordinarily be transfused into a recipient within a few minutes without any kind of dire consequences. 500 ml ब्लड जो है जिसको हमने सिट्रेट के साथ इनकोएगुलेबल बनाया है वो हम पेशेंट में कुछ ही मिनटों में ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, जिसके कोई डायर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. लेकिन अगर लिवर डैमेज्ड है, इफ़ द लिवर इज डैमेज्ड या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिट्रेटेड ब्लड और द प्लाज्मा आर गिवन टू रैपिडली, बहुत तेजी से विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ मिनट, तो गड़बड़ हो जाएगी. The citrate may not be removed quickly enough, and the citrate under these conditions greatly depress the level of calcium ions in the blood, which can result in tetany and convulsive death. Right? इतना ज़्यादा कैल्शियम कम हो सकता है कि मस्कुलर टेटनी, बिकॉज कैल्शियम लेवल बहुत डाउन जाए तो न्यूरॉन्स बिकम ऑटो एक्साइटेबल एंड मसल्स विल स्टार्ट कंट्रैक्टिंग. तो ये बात ध्यान देने वाली होती है कि लिवर डैमेज्ड तो नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो ब्लड नहीं चढ़ा रहे हैं. ओके, सो इस पर्टिकुलर आपको लिस्ट में ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी. एंटी कोएगुलेंट एजेंट हेपरिन इंक्लूडिंग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, वारफेरिन, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, फैक्टर 10A इनहिबिटर जिसका हमने जिक्र किया था. एंटीप्लेटलेट एजेंट भी डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे, वो आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूँगा, राइट, जिसमें एस्पिरिन का भी जिक्र है. ये कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा पूरे नोट्स का
वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, पिंड कमेंट भी दिखना, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।